Hello everyone. So today we will be discussing security technologies for big data protection. My name is Shreya and आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं बिग डेटा प्रोटेक्शन के लिए। इसमें हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को देखने वाले हैं जिनके थ्रू हम बिग डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। सो now let's see introduction to big data security. Big data security को समझने के पहले हम समझते हैं टर्म big data. Big data क्या है? Big data is nothing but a massive data set जो कि too large to handle and complex data set है, जिसके लिए हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज सफिशिएंट या फिर कॉम्पिटेंट नहीं है। उसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए ताकि हम बिग डेटा को स्टोर कर सके, एनालाइज कर सके एंड उसे अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सके। सो नाउ लेट्स सी कि बिग डेटा सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बिग डेटा में जनरली हमारे पास काफ़ी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि अगर हम अनप्रोटेक्टेड छोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजीली उस पर साइबर अटैक्स हो सकते हैं, हमारा डेटा स्टील किया जा सकता है जो कि फ्यूचर में बहुत ही इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है किसी भी बिजनेस या डिसीजन के अगेंस्ट में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम बिग डेटा को सिक्योर कर सकें ताकि हम डेटा ब्रिजेस, लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड फाइनेंशियल डैमेज को प्रोटेक्ट कर सकें। सो दैट्स व्हाई बिग डेटा सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। सो नाउ हम देखने वाले हैं कि चैलेंजेस इन बिग डेटा सिक्योरिटी, जो चैलेंजेस हमें टैकल करने हैं सो दैट वी कैन इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ आवर बिग डेटा। सो we have four major challenges here to be tackled. First one is volume. Volume means the amount of data we have. So when we are dealing with vast amount of data and securing such large scale data systems can be really overwhelming. So next point is variety. Variety means we have different types of data: structured, semi-structured, unstructured data, or in simple terms we can say that we have data in different formats like text data, audio, video data. हमारे पास different variety of data है and every type of data requires different security solution and approaches. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ डेटा मीन्स कितनी स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है. सो दिस रिफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड. सिक्योरिंग रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स इज चैलेंज बिकॉज डेटा रियल टाइम में जनरेट हो रहा है तो आपको उसी मोमेंट में उसे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, तो दैट कुड बी अ रियली चैलेंजिंग टास्क. The next is value. Ensuring that data is not compromised is very important. Big data is valuable. हमें पता है कि big data बहुत ज़्यादा valuable है and that makes it target for malicious activities as we have talked like cyber attacks or something. The more valuable the data, the more critical is to protect it. That's why ensuring that we tackle all these four major challenges, it's very important in terms of big data security. So how do we protect big data from these threats or challenges that we have just discussed, which is volume, variety, velocity and value? तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करने में. फर्स्ट वन इज encryption. Encryption is to safeguard data and ensure only authorized user can access it. बेसिकली इंक्रिप्शन हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट से उसे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग सम की. तो अनटिल अनलेस हमारे पास वो की ना हो हम वो डेटा को रीड नहीं कर सकते, वो अनरीडेबल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इज टू डिफाइन दैट हु हैज परमिशन टू व्यू और मैनिपुलेट डेटा. बेसिकली नेम से ही हमें समझ में आ रहा है टू गिवन द एक्सेस. सो अगर हम एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं सो वी कैन still manage it. Now is intrusion detection system to identify and alert on potential security threats. And next is data masking. Data masking is basically which hides specific part of data to protect sensitive information. And the other one is blockchain. Blockchain is very new technology, very emerging technology we can say, and blockchain which offers a decentralized and immutable method of protecting data. So now let's start with encryption. Encryption for data protection. So let's understand that what encryption is.
सो इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है कि एक रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना डेटा को, दैट इज इंक्रिप्शन, जो कि हम जनरली की के थ्रू करते हैं टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन वी हैव. फर्स्ट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड द अदर वन इज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन. सो इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हमारे पास इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की होती है, जैसे कि जनरली हम एज एल्गोरिदम में देखते हैं, दैट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टाइप. एंड द अदर वन इज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन. असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट कीज होती हैं जो कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करती हैं, एज हमारे पास इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के लिए डिफरेंट कीज होती हैं, जैसा कि हम RSA एल्गोरिदम में देखते हैं. Encryption can be applied when the data is stored and called as encryption at rest, and or it can be applied when it's transmitting over a network, and that which we call encryption in transit. ये इंश्योर करता है कि हमारा जो भी डेटा है वो किसी भी तरह हैकर्स के स्कोप में ना आए, एंड वी कैन इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, एज इंक्रिप्टेड डेटा को रीड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है अनटिल अनलेस हमारे पास कीज हों, तो ही हम यूज उसे रीड कर सकते हैं. तो इसका मेन यूज केस क्या है, जैसे कि इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिग डेटा इन क्लाउड स्टोरेज. तो जितना भी हमारा जो डेटा है वो क्लाउड पे जो स्टोर हो रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है. दैट्स व्हाई हम इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है. Next, we have access control mechanism. So in this technology, we ensure that who controls the access of certain type of data. Like we ensure that this data can be accessed by this person only, and that's how we ensure the control mechanism. So let's start with the first one, that is role based access control. Users are given access based on their roles. For example, only managers may have access to the financial data, and that's why we have a particular role that, like manager, and we have particular data like financial data. And इसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं financial data का access. So other one is attribute based access control. इसमें हम access देते हैं attributes के basis पे, like department के basis पे, project के basis पे, कि for example a certain group of people can only access a certain information about that project. The next one is multi-factor authentication. Multi-factor authentication क्या करता है? It adds another layer of protection, requiring multiple ways to verify users' identity, such as password and fingerprints. Normally भी हम Gmail पे भी login करते हैं, so it is also a multi-factor authentication की एक पहले pin आएगा, and then we have to enter that pin in various like the whatever platform we are using. So basically इसका मेन यूज केस क्या है कि ये लिमिट कर देता है एक्सेस को सेंसिटिव या फिर फाइनेंशियल डेटा के लिए, कि एक पर्सनल एक ऑथराइज्ड इंसान ही उस पर्टिकुलर डेटा को यूज कर सकता है. By using access control, companies can ensure that the only right people can view or use the sensitive data, and that's how we can ensure the security of the data. Now let's talk about intrusion detection system. Basically इसमें क्या होता है कि हम कंप्लीट नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं किसी भी सस्पिशियस या अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, और जब भी हमें वो एक्टिविटीज दिखती हैं सो हम अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्ड करते हैं. सो वी हैव two main types of IDs like detection system. First is network based IDs and the other one is host based IDs. तो network based IDs में हम complete network को monitor करते हैं, और कोई भी unusual activity दिखती है या फिर कोई भी हमें threats दिखते हैं, potential threats दिखते हैं, तो उसके according हम respond करते हैं. Whereas host based IDs में हम एक इंडिविजुअल मॉनिटर या फिर इंडिविजुअल सिस्टम को या कंप्यूटर को मॉनिटर करते हैं किसी भी एक्टिविटी या फिर किसी भी साइन ऑफ अटैक के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि कोई इंट्रूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है. So ID is like a security camera for your data. It alerts you when something unusual is happening, so you can respond before any real damage is done. Another useful technique is data masking. So data masking is technique that protects sensitive data by replacing it with fake data or masking a part of it. We have two main
types of data masking. First is static data masking, and the other one is dynamic data masking. So in static data masking, we permanently mask data often used in testing environments. And the other one, in the dynamic data masking, we mask data in real time. So users only see what they're allowed to see and nothing more than that. So for example, when using masked data, developers working on new app can still test the system without seeing the real customer information. And that's how data masking can be a really good technique when we are talking about techniques that can protect our data. Now, blockchain for big data security. Blockchain is an emerging technology in the big data security space, and here's how it helps. So, let's understand some of the characteristics of blockchain. First one is decentralization. Since blockchain doesn't rely on a single authority, there is no single point of failure. And the next one is immutability. So, once the data is returned to a blockchain, it cannot be altered, making it secure and tamper proof. The other one is transparency and auditing. Blockchain provides a clear audit trail, making it easy to verify the authenticity of the transaction. A good example of blockchain being used to ensure data integrity in supply chain management, where transparency and immutability are critical. Let's also touch on few advanced security technologies. So one of them is homomorphic encryption. It basically allows computation to be performed on encrypted data without needing to decrypt it first. And other one is secure multi-party computation, which is also called SMPC. It enables multiple entities to jointly compute a function without revealing their private inputs. The other one is tokenization. So in tokenization, it replaces sensitive data with unique tokens that can be used within system and without exposing actual data. So these technologies are becoming increasingly popular in fields like financial service, where privacy and data security are crucial. In conclusion, we can say that protecting big data requires a multi-layered approach. हमने different technologies देखी like encryption, access control, intrusion detection, and blockchain, all of which play a vital role in securing sensitive data. As data continues to grow in volume, variety, and value, it's essential to stay ahead of emerging threats and implement advanced security solutions. So thank you everyone for this discussion, and हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज देखी and हमने उनके यूज केसेस देखे. So that's it for today. Thank you so much.